गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आप सब अच्छे होंगे। तो चला आया एक ट्यूटोरियल लेकर आपके सामने। तो आज का ट्यूटोरियल बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। आज हम करने जा रहे हैं आउटलाइन। ऐसे बहुत ही लोग हैं जिसको आउटलाइन करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है एंड दिक्कत होती है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेगार होगा। और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे रेड बटन को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर देना। तो मैं नए नए को वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास से आगे पहुंच जाएगा। फोटो देख के करना होगा। अब शुरू करते हैं। जैसे भी शुरू कर दिए वैसे ही होगा। मैं तो फर्स्ट आई से ही शुरू करता हूँ। आपको देख लेना होगा किस बॉक्स में किस वाले पार्ट हैं, उस वाले पार्ट को उस बॉक्स में कर लेना है। ओके। और जब भी आप आउटलाइन करोगे तो आप धीरे धीरे से करोगे, आपका आउटलाइन बहुत ही अच्छा होगा। और प्रेशर कम देके आउटलाइन करना, कारण जब आप शेडिंग करोगे तब आपका प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। मैं आपको बोल देता हूँ, आप एक बार करना। ओके। तो देख सकते हो मैं करता हूँ। आपको पूरा वीडियो देखना है, इसके मत करना तो आप समझ जाओगे। तो मैं वीडियो को थोड़े स्पीड कर दिया हूँ, कारण वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाता है। और हेयर जिस बॉक्स में जैसे है वैसे आपको करना है। अब जब शेडिंग करोगे आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देख सकते हो मैं कैसे कर रहा हूँ, आपको भी वैसे भी कर लेना है। ओके। और आप जितना आउटलाइन पे टाइमिंग दोगे उतना ही अच्छा आपका ड्राइंग होगा। तो देख ही सकते हो मैं फुल टाइम देकर ये आउटलाइन कर रहा हूँ। ओके। आप भी कर लेना। तो देख ही सकते हो मैं करता हूँ। और आउटलाइन अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना।
और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर देना। मेरे नए नए ड्राइंग का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे आगे पहुंच जाएगा। ओके, तो देख सकते हो मैं धीरे धीरे से करता हूँ, आप भी धीरे धीरे से करना। तो कैसा लगा गाइस, आई होप आप सबको अच्छा लगा होगी। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर देना। एक मोटिवेशन मिलती है। और नेक्स्ट आप कैसे टॉपिक में वीडियो चाहते हो वो मुझे कमेंट में बता देना। जल्दी मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।